dear students, welcome back. I am Shweta and we are studying chapter CSS in Advanced Web Designing. Today we are going to study new topic in CSS, and that is different positions in CSS. So let's begin. Today we are going to study position property, different types of position property, float property, and lastly we will see display property. So we will see one by one. Position property. From the name itself we can say position means what? Position indicates the place, okay, where to place your HTML element or tag. पोजीशन क्या बोलता है कि किस जगह पर हमें HTML एलिमेंट या टैग का आउटपुट दिखना चाहिए. ओके यानी अगर मुझे H1 मैंने यहाँ पे H1 लिखा है, ये मिडल पोजीशन प्रॉपर्टी कहाँ पे आया? मिडल में आया. ओके सेंटर में है इसका पोजीशन. सो दिस इज वन टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी. तो मुझे मेरा HTML टैग या HTML एलिमेंट जब हम आउटपुट में देखेंगे, वेब ब्राउजर में देखेंगे, तो उसका पोजीशन किस तरह से रहना चाहिए वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं यूजिंग व्हाट? पोजीशन प्रॉपर्टी. सो लेट अस सी वन बाय वन. The position property specifies the type of positioning method used for an element. So what is this position property? ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी है जो हम लोग HTML टैग के लिए यूज करने वाले हैं. Okay, so this is nothing but it is going to show you the type of positions which we are going to use. Okay, there are different positions. From that different positions, which position you want to use, that we can decide using what? Which property? Position property. So position property का मतलब क्या है कि HTML एलिमेंट के लिए या फिर HTML टैग के लिए अगर हमें पोजीशन देना है, डिफरेंट पोजीशंस रहते हैं, उसमें से अगर मुझे कोई पोजीशन लिखना है तो मुझे पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है. उससे हम HTML टैग या HTML एलिमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा रहेगा वो कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. सो नाउ वी विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन वैल्यूज. पोजीशन क्या है? प्रॉपर्टी है और उसके डिफरेंट वैल्यूज से. कितने वैल्यूज से? 4 वैल्यूज. हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर फॉर पोजीशन प्रॉपर्टी? 4 values are there. What are they? They are static, relative, absolute, fixed. How many values are there for position? 4 values. Static, relative, absolute and fixed. So from this 4 values you can choose any value for the position. Okay. So in front of position, what we are going to write? We are going to write any value from this 4. Okay, we can write any value from this 4 and according to that value, your element or your HTML tag is going to get displayed. Okay, now elements are then positioned using the top, bottom, left and right properties. So afterwards, after giving this position, okay, if you are going to choose any one position from this, then after giving that position you can use this top, bottom, left and right properties. So after that only you can use this properties. Okay, अगर मैंने position property नहीं दिया, however this properties will not work unless the position property is set first. जब तक हम पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं देंगे तब तक हम लोग ये प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते. ओके, सो फॉर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी पहले हमें कौन सा प्रॉपर्टी देना पड़ेगा? पोजीशन प्रॉपर्टी. जैसे कि पोजीशन कोलन रिलेटिव. अगर मैंने ये पोजीशन दिया देन ओनली आई कैन यूज दिस टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज. अगर मैंने पोजीशन का यूज नहीं किया देन देयर विल बी नो यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज. ओके, सो पहले मुझे पोजीशन देना पड़ेगा, फिर ही मुझे ये प्रॉपर्टीज यूज करने का चांस मिलेगा. अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू यूज दिस प्रॉपर्टीज. ओके, देन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हेन यू आर यूजिंग टॉप प्रॉपर्टी यू कैन नॉट यूज बॉटम प्रॉपर्टी. व्हेन यू आर यूजिंग bottom property you are not able to use top property. Okay, then similarly for left and right also, when you are using left property then you cannot use right property. When you are using right property you cannot use left property. Okay, but
You can use this combination like top left, top right, bottom left, bottom right. These properties are allowed, but this using both at a time is not allowed. Means अगर आपको एक ही text को आपको top में भी रखना है और bottom में भी रखना है, so it will be not possible. It is not possible, right? You can place them at top left side or top right side, or bottom left side or bottom right side, but you cannot place them at top and bottom both at a time. Okay, so any one position is allowed from both of this, and from both of this also any one position. Okay, now we will see this different types one by one. Static position. Static, from the name itself we can say static means stable, or we cannot change the position. Okay, so static क्या होता है? Static means जैसे कि वैसा, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसे ही आने वाला है, उसे बोलते हैं हम लोग स्टैटिक. Static is the default value. So by default, what is the position? By default, position is always static. So remember one thing, when we are not using this position property, that time always your web page or your HTML element, it is in static position. HTML element में जब हम position property का use नहीं करते हैं, उस वक्त हमेशा HTML tag, HTML element कौन सा behavior position रहता है उसका? हमेशा static behavior रहता है. ओके, उसका position हमेशा static रहेगा, यानी जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, जैसे हमने डिक्लेयर किया है, वैसे ही वो आउटपुट में आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है. That is called as static. Okay, so they are not affected by the top, bottom, left and right properties. So अगर वो static है तो उसमें top का वैल्यू देने के लिए bottom, left and right ये properties का यूज करने का कोई भी जरूरत नहीं है, because it is not going to change the position. Okay, static means it is not going to change the position. So what is the use of giving all these properties? अगर वो अपना position ही change नहीं कर रहा है तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट ये प्रॉपर्टीज देने का कुछ मतलब ही नहीं होता है. ओके, सो ये प्रॉपर्टीज स्टैटिक के साथ नहीं वर्क करते. ओके, ऑल एलिमेंट्स आर इन ऑर्डर एज दे अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. जिस तरह से हमने HTML डॉक्यूमेंट में लिखा रहेगा उसी तरह से वो आउटपुट में भी आने वाले हैं. ओके, अगर हमने हेडिंग फर्स्ट लिखा है, उसके बाद पैराग्राफ लिखा है, तो आउटपुट में भी वैसे ही आएगा. हेडिंग पहले आएगा, फिर पैराग्राफ आएगा. जिस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट में लिखेंगे उसी तरह से आउटपुट में आएगा. ओके, हैज इट इज. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैटिक. समझा? नाउ लेट अस सी द एग्जांपल फॉर दिस. This is the example. Actually, there is no need to write all these things. Position colon static. Because why? There is no need. Because it is a by default position. तो position लिखने का जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग जो भी H1 में लिखेंगे, जैसे भी हम लोग कोडिंग लिखने वाले वैसे ही आउटपुट आने वाले हैं. तो पोजीशन देने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पोजीशन होता है. फिर भी कैसे लिखा जाता है वो मैंने बताया, इसका यूज नहीं है, आप इसको लिखने का जरूरत नहीं है. जैसे आप करके नहीं देखोगे प्रैक्टिकल तो भी चलेगा इसका. ओके, बिकॉज इसमें कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला है. स्टैटिक मीन स्टैटिक, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द पोजिशन. ओके, सो वी कैन यूज इट विथ any element or HTML tag, or even we can use them with class or IDs. Okay, so all the positions we can use with any HTML tags, or we can use it with class or IDs also. Okay, so this is about the static position. Static means stable. We cannot change the position of static. By default, whatever we write in the HTML document, that is going to come in the output. Relative position. Relative means, from the name itself we can say that it is related to something. Okay, related to something, like we can say screen of the browser, or any element of the browser, or the element itself. Okay, so what is that? We will see. Relative is used to set the element relative to its normal position. So it says that whatever element or tag you're writing and you're giving position to that element has relative, then that time it will be related to its normal position. That means wherever your element or tag is displayed, and if you want to move that
element or tag from its normal position to some other position, then that time it is going to move according to the related position. Okay, it is going to take its move from its normal position only. मीन्स इसका कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने किसी एलिमेंट को रिलेटिव पोजीशन दिया, अगर हमने किसी HTML टैग को पोजीशन रिलेटिव दिया तो क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन रिलेटिव किस पोजीशन से रिलेट करेगा, उसके नॉर्मल पोजीशन से। जैसे कि हम लोग ने अगर ये हेडिंग लिखा है मैंने रिलेटिव पोजीशन, ये कहाँ पे है, टॉप पे है। ओके, तो ये इसका नॉर्मल पोजीशन है। अगर मुझे इसके नॉर्मल पोजीशन से इसको यहाँ पे नीचे लाना है या सबसे नीचे रखना है, एकदम बॉटम में रखना है, so for that I'm going to do, I'm going to write position colon relative and what, bottom colon 0 pixels और 100 pixels from bottom, means bottom से वो थोड़ा सा 100 से ऊपर आएगा, right? So that is relative position, so it will be related to its normal position, means इससे related ही position वो change करेगा। Okay, so wherever your element or tag is present, from that position it is going to change its position where you are going to place it. Okay, so setting the top, bottom, left and right properties of a relatively positioned element will cause it to be adjusted away from its normal position. सी सिंपली अगर मैंने पोजीशन कोलन रिलेटिव लिखा तो आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखने वाला है, क्योंकि उसका नॉर्मल पोजीशन वही है जहां पे वो बैठा है। ओके, लेकिन अगर मुझे उसका नॉर्मल पोजीशन चेंज करना है, सो दैट टाइम मुझे ये प्रॉपर्टीज यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल सी नो चेंज। अगर मैंने पोजीशन रिलेटिव लिखा फिर भी उसमें आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये प्रॉपर्टी सेट ही नहीं किया। तो फिर वो मूव कहाँ करेगा, उसका ओरिजिनल जो पोजीशन रहेगा वो वहां पे ही रहेगा, नॉर्मल पोजीशन उसका जहां पे रहेगा वो वहां पे ही रहेगा। ओके, अगर मुझे उसको नॉर्मल पोजीशन से किसी और पोजीशन पे लेके आना है, दैट टाइम आई हैव टू यूज दिस प्रॉपर्टीज, इट इज कंपल्सरी। ओके, सो जैसे कि टॉप, बाय डिफॉल्ट अगर मेरा पैराग्राफ सेकंड है और मुझे उसको ऊपर लाना है, अगर मुझे उसको ऊपर प्लेस करना है, वो नीचे है, तो दैट टाइम आई एम गोइंग टू यूज टॉप कोलन वॉट एवर पिक्सल्स यू वांट टू गो, कितना टॉप आपको चाहिए। ओके, सो दैट टाइम इट विल मूव टू द टॉप पोजीशन। बॉटम मीन्स वॉच, बॉटम में अगर मुझे चाहिए रहेगा तो मैं बॉटम एट्रीब्यूट बॉटम प्रॉपर्टीज देंगे हम लोग। ओके, लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट, राइट में चाहिए तो राइट। ओके, तो वो कैसा पिक्सल देना पड़ेगा आपको, कितना लेफ्ट मूव करना चाहिए, कितना राइट मूव करना चाहिए, उस तरह से उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ओके, सो दैट इज रिलेटिव पोजीशन। Now see, this is the example. Here I am using both element. This example is using element or any HTML tag, and this example is by using class. Okay, so I'm not going to tell you always this thing. We are going to see different positions using both. Means we can use these positions using class, ID or any HTML tag. Whatever you want, you can use these positions with them. Okay, so see how you have to give this. In this example I am writing h1 tag and the position is relative and left colon 50 pixels. So what will happen, see, if I am not writing this 50 pixel and I am writing only position relative, then when you will see the output there will be no change, क्योंकि मैंने पोजीशन सिर्फ रिलेटिव दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि वो नॉर्मल पोजीशन से लेफ्ट में जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए, टॉप में जाना चाहिए या बॉटम में जाना चाहिए। इसके लिए मुझे ये लिखना कंपलसरी होता है। ओके, सो ऐसा नहीं कि मुझे लेफ्ट लिखना है, मैं कौन सा भी प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, कौन सा भी। ओके, अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने लेफ्ट 50 पिक्सल्स लिखा है, तो क्या हो जाएगा, सपोज अगर आपका ब्राउजर का स्क्रीन ये है, ओके, ये जो एज दिख रहा है यहाँ पे, ये अगर आपका स्क्रीन का एज है और यहाँ से 50 पिक्सल छोड़ेगा वो। ओके, फिर यहाँ से 50 पिक्सल छोड़ के वो डिस्प्ले करेगा। वैसे तो अगर आपका जहां पे भी H1, अगर सपोज ये वाला ही H1 है, ये हेडिंग है और मैंने बोला इसको लेफ्ट 50 पिक्सल्स, तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल पोजीशन यहाँ पे है उसका, तो यहाँ से वो 50 पिक्सल छोड़ के साइड में आ जाएगा। ओके, हम लोग कोडिंग देखने वाले हैं, तभी आपको बहुत अच्छे से इसका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये होते क्या है डिफरेंट पोजीशंस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेटिव पोजीशन। नेक्स्ट वी विल सी which position? We will see absolute position.
absolute position. Absolute position. Absolute means what? Complete. Okay. So this position, it actually depends upon your screen pixels. किसके ऊपर depend करता है ये? आपके screen के pixels के ऊपर. So this position, it will be, means if you want to place element anywhere on the screen, so that time it depends upon your computer or screen. Absolute allows you to place your element exactly where you want it. So what is the work of absolute position? You want to place your element exactly, means where you want that your element should be placed in the center of the screen, then that you can do using absolute position. If you want your screen your element should be placed at the top right means this side. If you want to place your element at the top left, then means this side. If you want to place your element at the bottom left, then this side. If you want to place your element here at the bottom right, then this side. So all this fixed positions, wherever you want to fix it, that time you can use which position? Absolute position. See, in absolute position, it never depends upon your normal position. Absolute position में normal position पे वो डिपेंड नहीं करेगा. ओके, रिलेटिव में कैसा था? रिलेटिव में वो जहां पे नॉर्मल पोजीशन रहेगा, जहां पे मेरा टेक्स्ट रहेगा, उससे हटकर मींस उस जगह से ही वो हाँ लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब काउंट करेगा, उसी जगह से वो पिक्सल्स काउंट करके वो पोजीशन लेगा. ओके, लेकिन एब्सोल्यूट पोजीशन वैसा है क्या? नहीं, वो स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो स्क्रीन के पिक्सल्स को काउंट करके ही अपनी जगह लेगा. ओके. Next point, it will be positioned related directly to the screen top left corner or depending on its parents. So see what it says, if parent is not there. Now what is this parent? This I am going to tell you in coding. There you can understand it very well what it is. Now see, अगर parent नहीं है, अगर वो parent means watch, अगर वो किसी के अंदर नहीं है, means किसी tag के अंदर कोई tag place है, so that time we can say that it is a parent and it is a child. Okay, so अगर suppose वैसा नहीं है तो क्या हो जाएगा? तब वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अपना पोजीशन लेता है. मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल दिस, यहाँ से अगर अपना आपका वेब ब्राउजर है, आपका स्क्रीन दिख रहा है, तो वो यहाँ टॉप लेफ्ट यहाँ से वो आपका पोजीशन लेगा और फिर यहाँ से वो अपना पिक्सल्स काउंट करके टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा. ओके, नहीं तो अगर वो किसी पेरेंट के अंदर है तो वो अपने पेरेंट का पोजीशन लेगा और वहां से वो एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा. ओके, ये पेरेंट का जो है वो ये दोनों भी हम लोग सब एग्जाम्पल कोडिंग में देखेंगे तब आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएगी एब्सोल्यूट क्या होता है. इतना याद रखना, एब्सोल्यूट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन. नॉर्मली जहाँ पे वो आया है वहां से वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो स्क्रीन का पिक्सल्स या फिर पेरेंट के पिक्सल से ही अपना पोजीशन चेंज करता है. एग्जाम्पल, this is the example. See, examples are similarly only means here I am giving you the type means style, how to write it, in which way. So the way will be same only, but only in coding we will now come to know how to how it works, how the output looks, how it works. That way we are going to come to know only when we are doing the coding. Okay, so this is all about the absolute position. Now let us see the last position, and that position is fixed position. Fixed position. Fixed position means what? From the name itself we can say that fixed means it is fixed, we cannot change it. Okay, it will be there only, it will be fixed for there. Okay, so what it is? Fixed helps to put the text fixed on the browser window. So this says that if you want the whatever text or HTML element that should be fixed on your browser window, whatever, whenever you change the browsers or you move the browsers or you scroll the screens, then to your text should be present over there. So that time you're going to use which position? Fixed position. फिक्स पोजीशन क्या होता है? फिक्स पोजीशन वो होता है जहां पे वो टेक्स्ट फिक्स रहेगा, यानी आपका स्क्रीन आप स्क्रॉल भी कर रहे हो ऊपर नीचे लेफ्ट राइट तो भी आपका जो टेक्स्ट फिक्स लिखा रहेगा वो आपको दिखेगा ही,
वो टेक्स्ट टॉप में रहेगा तो भी वो दिखेगा, बॉटम में रहेगा तो भी वो दिखेगा, लेफ्ट में रहेगा तो भी वो दिखेगा, राइट में रहेगा तो भी वो दिखेगा। आपने किसी भी पोजीशन पे उसको रखा रहेगा, अगर उसको आपने फिक्स दिया है तो वो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन आपको वो हमेशा दिखेगा। ओके, उसके फिक्स पोजीशन पे रहेगा और आपको वो हमेशा विजिबल रहेगा। सो इट ऑलवेज स्टेज इन द सेम प्लेस इवन इफ द पेज इज स्क्रोल। अगर आपने पेज को स्क्रोल भी किया तो भी क्या हो जाएगा, आपका सपोज आपका अगर पोजीशन, आपका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, ओके, दिस साइड, अगर मैंने कोई भी HTML एलिमेंट के अंदर एक टेक्स्ट लिखा है जिसको मैंने पोजीशन फिक्स्ड दिया है, और वो सपोज आपके टॉप राइट साइड में है वो टेक्स्ट, और अगर आपका स्क्रीन, मैंने स्क्रोल, सपोज यहाँ पे स्क्रोल बार है और स्क्रोल करके हम लोग आगे जा रहे हैं, ओके, तो भी ये टेक्स्ट हमेशा मुझे यहाँ पे दिखेगा ही। अगर आपने आगे भी गए तो भी वो जो फिक्स पोजीशन का टेक्स्ट रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा, ये आगे चला जाएगा ये नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो फिक्स दिया रहेगा वो दिखेगा। Okay, so this we will see in coding. Okay, this will come to know in coding how it is. So similarly, this is also the example how to write the fixed position, position colon fixed top 50 pixels. So it is not like that that only top is allowed. You can use any properties from top, bottom, left, right, anywhere, whatever you want. Okay, or any two, top right, left, top left, bottom right, bottom left, any two you can use, or any one you can use, whatever you want. So this is all about the fixed. Fixed position means what? Your text is going to get fixed at one place. It is not going to move anywhere even if your screen moves. Okay, fixed position means आपका text फिक्स हो जाएगा, चिपक जाएगा एक ही जगह पर। आप पूरे स्क्रीन को इधर उधर भी घुमाओगे वो वाले स्क्रीन को, फिर भी आपका टेक्स्ट यहाँ से वहां नहीं मूव करेगा, वो वहां पे ही रहेगा। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड पोजीशन। Now, before starting this float property, I would like to tell you that we have completed our position property. Okay, so we have seen different positions in position property, and that property we have completed, and this float property is a new property. Okay, now what is this float property? Float, from the name itself we can say that float means what? Floating, or we can say flowing. Okay, so this float property means where our HTML element or text should flow on the screen, that we can decide using what? Using float property. The float property specifies how an element should float. Means using this float property we can say that where or how our element they should float, means where they should flow. ओके, यानी अगर मुझे हमारे HTML एलिमेंट या HTML टैग किस तरह से फ्लो करने चाहिए वो डिसाइड करना है, सो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम फ्लोट प्रॉपर्टी से डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्लोटिंग वो हमेशा दो ही डायरेक्शंस में करेगा, आइदर लेफ्ट और राइट। ओके, टॉप बॉटम यहाँ पे यूज नहीं होता है। फ्लोट प्रॉपर्टी में दो ही रहते हैं पोजीशंस, दैट इज मींस वो लेफ्ट से रहेगा या फिर राइट से रहेगा। पोजीशन नहीं, इसे हम वैल्यूज कहेंगे। ओके, सो नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज। हाउ मेनी फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज आर देयर? 3 types of floating properties are there: float left, float right, and float none. Okay, how many properties? 3. Okay, left, right, and none. So float left means what? The element floats on the left side of the container. So what this means? This means that suppose, for example, if I am having image and paragraph, okay, I am writing first image tag, then I am using the paragraph tag. Okay, so in that case, if I am giving this float property to image, अगर मैंने मेरे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज का टैग लिखा है और पैराग्राफ का टैग लिखा है, इमेज टैग पहले लिखा है उसके बाद मैंने पैराग्राफ का टैग लिखा है, और मैंने ये फ्लोटिंग प्रॉपर्टी इमेज को दी, ओके, तो मैंने अगर लिखा है फ्लोट लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा? मेरा जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में आएगा। ओके, मेरा इमेज लेफ्ट साइड में आएगा और मेरा टेक्स्ट कौन सी साइड में आएगा? राइट साइड में। ओके, सो कौन फ्लोट कर रहा है? इमेज फ्लोट कर रहा है। इमेज कहाँ पे फ्लोट कर रहा है? कहाँ पे फ्लो कर रहा है? लेफ्ट साइड में, और मेरा टेक्स्ट राइट साइड में आएगा। ओके, देन नेक्स्ट
float right. So this what this is going to do, this is going to float my image where towards the right side, और text कहाँ पे आएगा left side में. मैंने float image को दिया है तो मेरा मैंने यहाँ पे लिखा है float right, तो मेरा image कहाँ पे आएगा right side में, और मेरा text कहाँ पे आएगा, जो भी पैराग्राफ में लिखा रहेगा वो मेरा left side में. Okay, then lastly we can say float none. This is the default property. This shows the element as it is. यानी अगर मैंने float property यूज नहीं किया तो by default हमेशा वो none ही रहता है, इसलिए वो जैसे है वैसे ही आएगा. ओके यानी जैसे मैंने लिखा है पहले इमेज फिर पैराग्राफ, तो पहले इमेज आएगा फिर पैराग्राफ आएगा, वो दोनों साइमल्टेनियस नहीं रहेंगे, मीन्स एक के बाजू में नहीं रहने वाले. ओके सो वो नन रहेगा, मीन्स बाय डिफॉल्ट जैसे दिया रहेगा वैसे ही वो आउटपुट में आने वाला है. ओके नाउ सपोज एग्जांपल लेट द इमेज फ्लोट टू द राइट. अगर मुझे इमेज को राइट साइड में फ्लोट करना है तो मैं कैसे कोडिंग लिखने वाली हूँ, इमेज फ्लोट कोलन राइट, और फिर इसको हमको बॉडी में बुलाना पड़ेगा. ओके सो मीन्स बॉडी में बुलाने की जरूरत नहीं, बॉडी में हमको इमेज लिखोगे तो इमेज फ्लोट राइट साइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा. So this also we will see the coding, then the idea will be very clear to you all. So I hope float properties clear to you. Okay, now we are going to see the last property of CSS, and that is which property? Display property. Last property of CSS is display property. So from the name itself we can say display means what? How we are going to view our element. Okay, display means viewing or seeing. Display means कैसे दिखेगा वो, है ना. So वो हम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं, display property से. The display property specifies how an element is going to get placed on the web page. Means using this display property where you have to place the element or how it should look, that we can decide using which property? Display property. Okay, how our element should get placed, okay, or how it should get displayed on the web page, that we can decide using which property? Display property. हमारे HTML एलिमेंट या टेक्स्ट जो भी हम लोग ने लिखा रहेगा वो किस तरह से दिखने चाहिए, किस तरह से प्लेस होनी चाहिए वेब पेज पे, वो हम किस प्रॉपर्टी से डिसाइड कर सकते हैं? बाय यूजिंग विच प्रॉपर्टी? डिस्प्ले प्रॉपर्टी. नाउ देयर आर 4 types of display properties. How many properties are there? 4 different types of display properties are there. They are display inline. Inline means what? एक ही लाइन में. Okay, so it is used to display an element as inline element. Height and width properties will have no effect. Now see, display inline means what? एक ही लाइन में, जैसे ये सब एक ही लाइन में लिखा है, that is this inline. Okay, जैसे ये सब एक लाइन में है, so yeah, this is what? This is also inline. So यहाँ पे height और width का कुछ भी effect नहीं होता है. Height और width properties अगर आपने यूज किए, so there is no use of using it because इसका कुछ असर होने वाला नहीं है inline में. Okay, now next is display block. It is used to display an element as a block element. It starts on a new line and takes up the whole width. See what it says. Block means what? पूरा एक जो रहता है वो उससे कहते हैं हम लोग पूरा एक ब्लॉक. ओके, जैसे अभी ये डिस्प्ले इनलाइन एक ब्लॉक में लिखा है, डिस्प्ले ब्लॉक सेकंड लाइन में, सेकंड ब्लॉक में, दिस इज इन द थर्ड ब्लॉक एंड दिस इज इन द फोर्थ ब्लॉक. सो दिस इज व्हाट? दिस आर ऑल दी ब्लॉक्स. इस एक एक लाइन के अंदर नेक्स्ट न्यू लाइन में आ रहे हैं तो वो एक एक ब्लॉक में आ रहे हैं, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं. और एक की लाइन में आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनलाइन. नाउ आपने अगर देखा होगा कि जब हम लोग H1 यूज करते हैं, H1 जब यूज करते हैं और अगर सपोज मैंने उसको बॉर्डर दिया या फिर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया तो वो पूरे आउटपुट में यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक एंड तक पूरी स्क्रीन को वो कवर करेगा. ओके, H1 या फिर पैराग्राफ, ये टैग्स अगर हम लोग ने यूज किए और इसको अगर हमने बैकग्राउंड कलर दिया या फिर बॉर्डर दिया तो वो क्या करता है? आपने अगर कभी नोटिस किया रहेगा तो वो पूरे स्क्रीन में उनको बैकग्राउंड कलर देगा. जो भी टेक्स्ट हम लोग ने पैराग्राफ में या H1 में लिखा रहेगा तो उनके पीछे वो पूरा बैकग्राउंड कलर देगा या फिर बॉर्डर जो भी हमने दिया रहेगा वो पूरा डिस्प्ले करेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड ऑफ द स्क्रीन, मीन्स यहाँ तक. ओके, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पूरा देगा.
सो दैट इज ब्लॉक। लेकिन अगर मैंने इटैलिक बोल्ड ऐसे टैग यूज किए और उनको मैंने बैकग्राउंड कलर या फिर बॉर्डर दिया तो वो कहाँ तक रहता है, वो पूरे लेफ्ट टू राइट तक लेगा क्या, नहीं। जहां तक टेक्स्ट रहता है उधर तक ही वो बैकग्राउंड कलर या फिर बॉर्डर लेता है। सो दे आर व्हाट, दे आर इन लाइन। ओके, मीन्स वो एक ही लाइन पे आएंगे। नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए मुझे हमेशा ब्रेक देना पड़ता है ना। जैसे इटालिक टेक्स्ट लिखोगे, फिर अगर आपने बोल्ड टेक्स्ट लिखा तो ये दोनों के बीच में अगर मुझे गैप चाहिए तो मुझे क्या देना पड़ता है, ब्रेक देना पड़ता है। तो ही बोल्ड वाला टेक्स्ट जो है वो नीचे आएगा इटालिक के नीचे। ओके, सो दैट इज इनलाइन एंड ब्लॉक। Now, what is display inline block? It is used to display an element as inline level block container. It is similar to inline, but the difference is that you are able to set height and width. अभी ये inline block क्या होता है? Inline तो समझा कि एक ही लाइन में, block समझा कि अलग अलग लाइन में, लेकिन inline block क्या रहेगा? Combination of inline and block. Inline means एक ही लाइन में, तो inline में क्या हो जाएगा? वो तो सब एक ही लाइन में आएंगे, लेकिन हम लोग इस इनलाइन ब्लॉक में हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं, because it is block also. That's why we can give height and width to this inline block. Okay, so for inline अगर सिर्फ inline वैल्यू है तो that time मेरा height and width कुछ काम का नहीं है, लेकिन अगर मैंने inline ब्लॉक दिया तो मेरा height और width हो सकता है, मीन्स मैं हाइट और width सेट कर सकते हैं। ओके, हम लोग हाइट और width सेट कर सकते हैं for block also and for inline block also. Okay, that is the difference between inline block. Then lastly, display none. The element is completely removed. Now see what happens. अगर मैंने display none किया तो जिस भी element या जिस भी tag को मैंने ये property दिया रहेगा display none करके, जिस भी इसके लिए मैंने ये property और value लिखा रहेगा display none, वो element हमें आउटपुट में नहीं दिखेगा। ओके, अगर मैंने h1 को डिस्प्ले नन ऐसा प्रॉपर्टी और वैल्यू दिया है तो क्या हो जाएगा, h1 में जो भी टेक्स्ट हम लोग ने लिखा रहेगा वो आउटपुट में नहीं दिखेगा। ओके, दिस विल कम टू नो व्हेन वी विल सी द कोडिंग। Okay, so I hope this all four types of display properties are clear to you. Inline means whatever the text you are writing, that will be in inline, okay, in one line. Block means whatever text or anything you're writing has a block, that will be displayed in blocks. Okay, different blocks. Display inline block means here we can, all the text will be in the inline position, but here we can give the height and width. None means that text is not going to get displayed in the output. Okay, let us see the example for this, how to write. See, here I am using class as well as I am using what, I'm using the element also. Display colon block means whichever class you're calling, this class name is what, A. So this class, wherever, for whichever element you're calling this class, then they will contain which property, display block, means their text will get displayed in the block. Okay, then paragraph tag, for paragraph tag I am using display property as and the value is inline. So for paragraph it is going to display the text in inline, in one line. Okay, so how this works, this we will come to know when we will see the coding. Okay, you should know what is inline, what is block, and what is inline block. And there also in coding I am going to explain you all this display properties very clearly. Okay, so this is all about the display properties. Okay, so this is the coding, simple coding I have written. I am going to show you different positions in this coding. Okay, so what are the different positions? Static, relative, absolute, and fixed. Okay, these are the four positions. Then we are going to see all of them in this coding. Okay, now this is a simple coding. Here I'm not using any position. I'm not giving any CSS properties. Okay, I'm not using any properties also in the style. Now let us see the output of this coding. So what will be the output? Simple welcome, welcome, Kalyan East and Model College. This is going to come in the output. Let us see the output. I'll just refresh it. See, welcome Kalyan East Model College. This is a simple output and this is position colon static. This is a static position. Okay, here
nothing is going to get changed, okay, because it is a static position. बाय डिफॉल्ट हमेशा पोजीशन कौन सा होता है, स्टैटिक. तो ये कौन सा पोजीशन है, स्टैटिक. यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है. हाइट विड्थ, सॉरी हाइट विड्थ नहीं, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, ये सब आप वैल्यूज दोगे तो भी स्टैटिक के लिए कोई भी चेंज नहीं होगा. ओके सो अभी हम क्या करेंगे, स्टैटिक हो गया. स्टैटिक समझा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो भी पोजीशन है. ओके नाउ अगर फिर भी आपको दे के देखना है कि स्टैटिक पोजीशन सच में आप रन होता है कि नहीं, तो चलो हम H1 को पोजीशन कोलन स्टैटिक दे के देखते हैं कि कुछ इफेक्ट होगा क्या. आई एम सेविंग दिस फाइल एंड लेट अस सी द आउटपुट. So see, no change. I have refreshed this. There is no change. Static means there will be no change. It is going to display as it is. Now, chalo, we will see that whether if I'm giving, suppose if I'm giving here left, whether it works or not, we will see that also. 100 pixels. Save the file. Then see the output. Refresh it. No change. It has not moved to the left position 100 pixels. No. So no change because it is static. So for static, left, right, top, bottom, all these values are not going to work. Okay. Now, so I'll remove this. Now what I will do, I will write position fixed. Absolute and relative I will teach you in this only. So now we will see fixed position first. Now when I'm making it fixed, what I will do, position where I will shift it to left. Okay, left colon 500, or I will do one thing, I will shift it to the right side only, means it will be good for you to see the example how it looks. Okay, so position fixed right 100 pixels. Now again let me give some border also for this, border colon solid. Okay, then color should be red, so I'm giving color red. See, I'm not using your border color. This is also valid. If you're using in this way also, this is going to give you the output. ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, otherwise यहाँ पे सेमीकोलन डाल के border dash color लिखो red, that will also work. Okay, now I will save this file and we will see the output. So let us see the output. See, now this value has become fixed. अभी ये value fixed हो गया. अभी आप स्क्रीन छोटा भी करोगे तो भी आपको ये राइट साइड में दिखेगा ही. आप राइट साइड से शिफ्ट, लेट अस सी ना, लेट अस सी. सी, मैंने अभी स्क्रीन को छोटा कर दिया, फिर भी ये राइट साइड में दिख ही रहा है मुझे. इवन यू स्क्रोल, इवन इफ यू नॉट स्क्रोल, देन ऑल्सो दिस इज फिक्स्ड. अभी ये फिक्स्ड हो गया, अभी ये मुझे हमेशा दिखेगा. ओके, यहाँ पे दिखने ही वाला है. इसको बड़ा करो छोटा करो, ये फिक्स पोजिशन पे रहेगा. बाकी सब इधर से उधर जाएगा लेकिन ये नहीं चेंज होगा. सपोज अभी मैंने इसी पोजीशन को, अगर अभी ये राइट में है, इसको बॉटम में कर देते हैं. ओके, आई विल सेव द फाइल. 0 पिक्सल्स मीन्स वो बॉर्डर मोस्ट मीन्स एकदम कॉर्नर का ही पोजीशन लेगा. ओके, नाउ रिफ्रेश दिस. सी, बॉटम का पोजीशन आ गया. अब क्या हो जाएगा, अभी मैं सपोज इसको छोटा कर देती हूँ तो भी ये दिख रहा है. देखो इसका मैंने कितना भी इसका साइज, इसका हाइट में कितना भी कम करूँ फिर भी मुझे ये दिखने ही वाला है. ओके, सो ऐसा नहीं है कि मैंने ये छोटा कर दिया तो मुझे नहीं दिखना चाहिए, ये दिखेगा ही आपको. ओके, सो दिस इज फिक्स्ड. ओके, फिक्स्ड कैसे रहता है, वो अपने पोजीशन में चिपक गया, अभी वो वहाँ से नहीं हिलने वाला है, कुछ भी कर लो. ओके, सो दैट इज अबाउट फिक्स्ड. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पोजीशन. अभी मैं पैराग्राफ के लिए पोजीशन देके देखती हूँ. पोजीशन colon relative curly braces. Save this file. Now see the output. I am refreshing it. Can you see any change? No change. क्यों चेंज नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ पोजीशन रिलेटिव लिखा, मैंने यहाँ पे लेफ्ट टॉप राइट बॉटम ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए वो अपने नॉर्मल पोजीशन से हिला ही नहीं. उसका नॉर्मल पोजीशन क्या था, कल्याण ईस्ट. यहाँ पे पैराग्राफ दिया था, यहाँ पे ही है वो, क्योंकि मैंने उसको हिलाया ही नहीं, मीन्स यहाँ पे उसका नॉर्मल पोजीशन है.
अब क्या होगा, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से, अगर मैंने लेफ्ट 100 पिक्सल किया तो लेफ्ट 100 पिक्सल मूव करेगा, या फिर मैंने टॉप 100 पिक्सल किया, जो भी पिक्सल आपको देने हैं वो दे के देखेंगे। ओके, सो लेट अस सी द आउटपुट, लेट अस सी द कोडिंग, चेंज करके देखते हैं इसको। ओके, सेमी कोलन, हम क्या करेंगे, टॉप से उसको 150 पिक्सल देते हैं। ओके, सेव, नाउ सी द पोजीशन, अभी इसका पोजीशन देखो हो गया चेंज। उसने इस पोजीशन से, उसने स्क्रीन का पोजीशन नहीं लिया, वो यहाँ पे था, वहां से उसने 150 पिक्सल्स काउंट करके यहाँ पे आ गया। ओके, उसी तरह से अगर मैंने लेफ्ट किया, लेफ्ट कोलन 100 पिक्सल्स, सेव द फाइल एंड सी द आउटपुट। अब क्या किया उसने, यहाँ से, क्योंकि उसके सामने तो कोई नहीं था, तो यहाँ से उसने कितने पिक्सल छोड़े, 100 पिक्सल, हमने 100 दिए थे तो 100 पिक्सल छोड़ के आ गया। ओके, सो दिस इज अबाउट द रिलेटिव, वो अपने नॉर्मल पोजीशन से ही पिक्सल्स लेगा। ओके, नाउ हम इटैलिक, जो हमने इटैलिक टैग यूज किया है, उसके लिए हम पोजीशन कोलन एब्सोल्यूट दे के देखते हैं। यहाँ पे भी सिर्फ एब्सोल्यूट लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, हमें उसका टॉप राइट बॉटम कुछ तो देना ही पड़ेगा, फिर ही इफेक्ट दिखेगा। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे भी मैंने टॉप 150 दिया है, आई को भी 150 दे के देखेंगे कि क्या होता है, कि कहाँ पे आएगा। सेव द फाइल एंड सी द आउटपुट। क्या हुआ, यस, ये दोनों सेम पोजीशन पे है क्या, नहीं। इसने क्या किया, इसने इस स्क्रीन से, ये लेफ्ट कॉर्नर के स्क्रीन से उसने पिक्सल्स काउंट करके यहाँ पे डिस्प्ले किया, और इसने क्या किया था, ये रिलेटिव था, ये जो पोजीशन पे था उस पोजीशन से उसने काउंट किया है 100 पिक्सल्स। ओके, और इसने टॉप मोस्ट 100 है या 150, जो भी 150 आई थिंक 150, राइट। सो उसने उस तरह से काउंट किया। सो इस तरह से वो चेंज होके आएगा। एब्सोल्यूट क्या करता है, स्क्रीन के पिक्सल देखेगा, वो आपके जो एलिमेंट है उसके पिक्सल्स नहीं देखने वाले। ओके, नाउ ये तो सिंपल था, मैंने आपको एब्सोल्यूट में दो बातें बोली थी। I have told you two things in absolute. One, it is going to see whether if parents are not there, then it is going to take the screen pixels. But if parents are there, then it is going to see the position of parents pixel. Depending upon the parents pixel, it is going to set its position. Okay, so अब एक काम करते हैं, ये इटालिक जो है वो हम लोग पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं। पैराग्राफ के अंदर लिखना मीन्स क्या हो जाएगा, मुझे पैराग्राफ यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो अब अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ जो है वो पेरेंट बन गया, और आई उसके अंदर लिखा है पैराग्राफ के अंदर, तो आई क्या हो गया, उसका चाइल्ड। अब क्या होगा वो देखना पड़ेगा, लेकिन एक काम करते हैं, उसके पहले अच्छे से समझना चाहिए कि वो उसी के अंदर है, उसके लिए हमें उसका बॉर्डर बनाना पड़ेगा। उसका बॉर्डर अगर हम लोग बनाएंगे तो हमको आइडिया क्लियर हो जाता है कि वो उसी के अंदर है। बॉर्डर सॉलिड ब्लू, हाइट देते, किसका हाइट है ये, बॉर्डर का, बॉर्डर का हाइट सपोज 500 पिक्सल्स कोलन विड्थ, विड्थ भी हम लोग 500 पिक्सल्स देते हैं। ओके, सेव दिस फाइल, अब हम उसको रन करके देखेंगे। ओके, नाउ सी क्या हो गया, अब ये इसके अंदर आ गया, अब इटैलिक पैराग्राफ का चाइल्ड बन गया, बच्चा बन गया। तो क्या हो जाएगा, इसके पेरेंट का जहाँ से स्क्रीन चालू होता है वहाँ से वो अपना पोजीशन लेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने कोडिंग में क्या लिखा है देखो, एब्सोल्यूट टॉप 150 पिक्सल, और ये चाइल्ड है पैराग्राफ का, तो वो पैराग्राफ से अपना टॉप लेगा 150 पिक्सल्स। ओके, सो कैसे लिया उसने देखो, यहाँ से 150 पिक्सल छोड़ के यहाँ पे डिस्प्ले किया। अब और एक पोजीशन ट्राई करके देखते हैं उसका, मीन्स पोजीशन टॉप तो लिया, अब लेफ्ट वो किसका लेता है वो भी देखेंगे। उसने लेफ्ट अभी किसका लेना चाहिए, पेरेंट का ही लेना चाहिए, क्योंकि वो पेरेंट के अंदर है, तो पेरेंट से ही उसने अपना पिक्सल्स लेना चाहिए। सो लेट अस सी द आउटपुट। सी अभी उसने क्या किया, यहाँ से 150 पिक्सल्स, 100 पिक्सल, सॉरी नॉट 150, 100 दिया है ना हमने, तो उसने 100 पिक्सल्स अपने पेरेंट से लिया है, पेरेंट से छोड़ के इस बॉर्डर से। अगर मैंने पेरेंट के बाहर लिखा था तो कहाँ पे आया था, देखा था आपने यहाँ पे, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, सो एब्सोल्यूट क्या करता है, if parent is there then it is going to see the
pixels of parent and then it is going to set its position. Okay, but relative क्या करता है, relative अपने position से मीन्स उसका करंट पोजीशन जो रहेगा, नॉर्मल पोजीशन जो रहता है वहाँ से वो पिक्सल्स काउंट करेगा. जैसे अभी ये पूरा रिलेटिव है. ओके, सो इसका भी हम लोग फुल चेंज करके देखते हैं. देखो इसका पोजीशन पैराग्राफ क्या है, रिलेटिव पोजीशन है. तो चलो इसको हम लोग राइट में कर देते हैं. राइट मूव करेगा अंदर राइट साइड. ओके, ये राइट साइड जा रहा है 100 पिक्सल. लेफ्ट साइड मीन्स ये साइड मूव करने का. लेफ्ट साइड मीन्स दिस साइड इट इज गोइंग टू मूव एंड राइट साइड मीन्स इट इज गोइंग टू मूव इन साइड. ओके, सो अगर मुझे इस साइड ही राइट चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा. व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट हियर माइनस. I will write, then see the output how it looks. Then this side it will go minus right side means left side में आएगा. Okay, so this is all about the positions. So I hope this is clear to you. पूरे positions clear हो गए. यहाँ पे मैंने चारों भी positions बताए आपको. Fixed means it is not going to change the position. Whatever happens, it is going to remain as it is till it is fixed. Relative means it is depending upon its normal position and from that normal position it is going to change its position. Absolute position, it depends upon the parent. If parent is not there, then it is going to depend upon the screen pixels. Okay, from screen pixels it will leave its position, it will decide its position. Otherwise, depending upon the parent, it is going to decide its position. Okay, so this is all about the positions. Next we will see the coding for float. Okay, so देखो this is the float coding, sorry not float, it is float. अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने बॉडी में मैंने एक इमेज लिया है और पैराग्राफ लिया. ओके, सो इमेज मेरे पीसी में जो भी इमेज लोकेशन था वो मैंने कॉपी पेस्ट किया. यू ऑल्सो डू द सेम थिंग, यू कॉपी इमेज लोकेशन फ्रॉम योर browser, from your computer and that you have to paste it. Okay, then this is the paragraph. Hello, welcome to the float property of CSS. Now I will delete this. Without writing this, how it looks, that we are going to see. Okay, save this file, see the output. So see, this is my output without applying any float property. I'm not applying any float property, so this is the output. Image अपने पोजीशन पे आ गया और पैराग्राफ अपने पोजीशन पे. हमने कोडिंग में कैसा लिखा था वैसे ही आएगा. देखो पहले इमेज आया फिर पैराग्राफ. सो इन दिस व्हाट इज द फ्लोट, फ्लोट इज नन. यहाँ पे फ्लोट क्या है, नन है. इसलिए फ्लोट का वैल्यू जो है नन है. बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू रहता है, इसलिए वो जैसा रहेगा वैसे ही आएगा, लाइक दिस. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, now we will write here the float property. Okay, for image I'm writing, I'm not writing paragraph. You can even write for paragraph, you can write for any HTML tags. Okay, float property ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेज के लिए चलेगा, किसी के लिए भी चल सकता है, लेकिन फ्लोट पे इसलिए दिखा रहे हैं कि उससे आपको क्लियर आइडिया दिखेगा. फ्लोट इसको लगाएंगे तो कैसी इमेज कहाँ पे आ रहा है, टेक्स्ट कहाँ पे, क्योंकि दोनों भी टेक्स्ट रहेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए. नाउ सी, आई एम राइटिंग योर float colon left. We will change the height and width so that it will look very big in size. I'll write 100 pixels height for image and width 100 pixels. Okay, save this. Let us see the output for this. Refresh this. See, क्या हुआ, अभी बहुत छोटा दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे. ओके, हाइट 500. अब क्या हो गया, मैंने फ्लोट लेफ्ट किया, इमेज को मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी दिया, तो इमेज कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में, और पैराग्राफ कहाँ पे आ गया, राइट साइड में. पहले कैसा था, नन था तो ये ऊपर था, उसके नीचे टेक्स्ट था, जैसे लिखा था वैसे ही आया था. अब क्या हो गया, फ्लोट मीन्स ये लेफ्ट साइड में मूव हो गया इमेज, और टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, पैराग्राफ उसके राइट साइड में. ओके, नाउ सिमिलर थिंग विल हैपन फॉर राइट ऑल्सो. अभी राइट लिखेंगे फ्लोट तो क्या हो जाएगा,
see the output, ये right side में आ गया. Okay, image right side and text left side. This is all about the float. Okay, float can be used for image as well as for all the HTML tags wherever you want to keep. Okay, so it is going to move both sides either to the left or to the right, and by default it is always which value? None. Now last we will see display. Now see the coding for display. अब डिस्प्ले के लिए मुझे कोडिंग देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इसका आउटपुट कैसे दिखता है वो देखेंगे फर्स्ट. ओके, सो सी द आउटपुट फॉर दिस. सिंपल आउटपुट, कुछ भी नहीं. हेडिंग एक लाइन में आया, इटैलिक जो मैंने अलग अलग लाइन में दिखे थे फिर भी एक ही लाइन में आ गए. क्यों? क्योंकि ब्रेक नहीं दिया. ये टेक्स्ट है, इन लोग पूरा ब्लॉक नहीं रहते हैं. सो दिस इज now here you are going to understand what is block and what is inline. Okay, paragraph. Okay, we will do one thing. We will just write here, I'll write h1, I will write background color. Otherwise instead of background color I will write border. Okay, border colon solid, and color of the border should be red. Similarly I will write for italic also, italic border colon solid, and color should be green. Similarly I will write for paragraph. Paragraph also border should be solid, and the color should be blue. Okay, save the file. Now see the output, how it looks. It is very important. See the output. Yes, can you see the difference between all these three? Heading को मैंने border दिया तो वो कहाँ से आ गया? Starting to end. Means this is a block. Heading is what? It is block. It is going to occupy the whole block. This is full one block. Then italic, it is a text. It is inline. It is not block. That's why क्या हो गया? सिर्फ जितना लिखा था उतने ही उसी को ही सिर्फ border आ गया और सब एक ही लाइन में आ गए. Because these are inline. This is inline. Inline है इसलिए उन लोग सब लोग एक ही लाइन में आ गए. Okay, so and paragraph is also what? Block, क्योंकि ये पूरा ले रहा है. Okay, so this is also block. पूरा block ले रहा है ना, ये पूरे block को उसने border कर दिया तो ये पूरे block लेता है. So that's why paragraph and headings, these are all what? Blocks, and this is inline. So this is the difference. Now what we will do, this heading, you know, this is a block. So let us make this inline. And let us make this inline as a block. Inline क्या होता है? एक ही लाइन में आ गया. देखो ये सब एक ही लाइन में आ गया. So this is inline. So इसको हम लोग block कर देंगे. और ये भी क्या है? Block है paragraph. तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? Inline. So let us see whether it works or not. Okay. So I will write here display colon inline. Okay. Then for this what I will write? Display colon block. For paragraph what I will write? Display colon inline. Okay, now save the file. See the output. What is the output? Can you see the change? Yes, heading has become what? Inline, and all this italic, they are become block. ओके, सी ब्लॉक हो गए सब इटैलिक, इसलिए सब लोग ने पूरा एक एक ब्लॉक लिया और सब लोग अलग अलग लाइन पे आ गए. ओके, पैराग्राफ भी क्या बन गया अभी? इन लाइन. सो दिस इज द चेंज वी कैन सी. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, द कोडिंग हैज बीन क्लोज्ड. ओके, लेट मी ओपन दैट कोडिंग. वेयर इट इज, what was the name for that coding? It was display. So I will just open the coding of this. It has been closed by me by mistake. Open with Notepad. So now for inline, height width chalega kya? No, I have told you that for inline height and width never works. So then also we will see whether height and width works or not. I will give height
100 pixels. And let us run the coding and see whether it works or not. Okay, no change. Now what we will do, we will see whether it works for block, height, height, colon 100 pixels. Okay, save. Now let us see the output. Refresh. Yes, it works for block, but it is not working for inline. So that is the difference. I have told you that for inline height and width never works. Inline के लिए height और width work नहीं करेगा, और height and width किसके लिए work करेगा? Inline block के लिए और block के लिए. Okay. Now we will just see the last, not last but inline block. चलो इसको पैराग्राफ को inline block देके देखते हैं क्या होता है. रिफ्रेश. सो ये थोड़ा सा यहाँ से दूर हो गया, क्योंकि अभी ये अपना प्रॉपर्टी सेट कर सकता है, मीन्स इसमें हम लोग हाइट विड्थ दे सकते हैं. तो अभी चलो इसको हम हाइट और विड्थ दे के देखते हैं कि क्या चेंज होता है. 100 पिक्सल्स कोलन विड्थ कोलन 500 pixels. Let us save this and let us see the output whether it works or not for paragraph. देखो हो गया. सो इनलाइन ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा कि हाइट एंड विड्थ वो चेंज करेगा. इनलाइन मीन्स एक ही इसमें आने वाला है, लेकिन हाइट एंड विड्थ इज गोइंग टू वर्क फॉर दिस. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द display properties, and one more is remaining, and that is, what is remaining? None. Okay, display. If I'm giving for h1, I'm writing display none. Let us save this and see the output. What will happen? See, remove हो गया. h1 means we are not able to see. It is there but we are not going to see it. It has been removed from the display. Okay, this h1 heading none has been removed. मैंने क्या किया था, मैंने h1 डिस्प्ले को नन कर दिया, तो ये जो h1 हेडिंग है वो डिस्प्ले में नहीं दिखना चाहिए, ऐसा मैंने बोला. डिस्प्ले नन नहीं दिखना चाहिए. सो वी कैन नॉट सी दिस इन द आउटपुट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द display. So I hope this is all clear to you. So today whatever we have seen, that is all the different positions in CSS, then float property, and lastly we have seen the display property. So I think this is all clear to you. Now we have completed the topic CSS in HTML. In next lecture we are going to study new HTML topic. Okay, we have not completed our chapter. We are studying HTML only, but in HTML we are going to see new topic. CSS has been completed. Okay, so that's for today. Thank you for watching this video. See you in the next lecture. Till then, bye, take care, and happy learning.